चलिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 इंच। चलिए हम बैक साइड के हेयर को क्लिप करके फिक्स कर देते हैं बिकॉज़ मुझे अभी बैक साइड के हेयर की कोई नीड नहीं है एंड जो फ्रंट के मेरे हेयर हैं, उसमें से मैं एग्ज़ैक्ट मिडल पार्टिंग डिवाइड कर दूँगी। चलिए ये मेरा हो गया है मिडल पार्टिंग। के बाद यहाँ पे मैंने लिया है बॉक्स एरिया, है ना? मिडल पार्टिंग से मैंने लिया है बॉक्स एरिया, जिसे मैंने राइट में एक बॉक्स लिया है, वैसे ही मैं लेफ्ट में भी एक और बॉक्स ले रही हूँ। चलिए सेक्शन को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा टैंगल फ्री कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल लेयर, राइट? ये जो मेरा सेक्शन है उसको मैं कर रही हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। तो आपको ओवरलैप करना है राइट डायरेक्शन में एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन की ट्विस्ट करनी है लेफ्ट। ये अभी मेरा सेक्शन है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी लेफ्ट, इसकी भी पर्टिकुलर होगी लेफ्ट। चलिए एक और ऐड ऑन कर देते हैं सेक्शन। अब इसको कर रहे हैं क्लिप। फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल लेयर लेंगे, राइट? इस तरह से आपको लेना है हॉरिजॉन्टल लेयर। बाकी का जो सेक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे मेरी दोनों ब्रेड डन हो चुकी है एंड ये दोनों ब्रेड को अब आपको करना है पोनी। ऐसे अच्छे से आपको सेक्शन को टाइट कर देना है। ये जो हमारी फर्स्ट वाली पोनी है उसको हम फ्रंट साइड कर देंगे।
यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेकंड पोनी टेल। पोनी बनानी है फर्स्ट के एग्जिट नीचे। ये सेकंड पोनी जो है उसके नीचे से थोड़े हेयर आपको लेने हैं इस तरह से। अगेन पोनी बनाएंगे, वो हेयर को आपको सेकंड पोनी के साथ मर्ज कर देना है, वो आप टाइट पोनी करें या लूज पोनी करें। एंड इसके बाद ये हमारी जो फर्स्ट पोनी है उसमें से उस यू पिन को खींचे, उससे क्या होगा, हमारी सेकंड पोनी बाहर आ जाएगी। चले, तो यहाँ पे हमने डन कर दिया है। एक सेक्शन लेना है एंड देन बैक कोमिंग कर देना है ना। इससे क्या होगा, आप यू पिन्स लगाओगे उसमें आपको ग्रिप मिल जाएगी अच्छे से एंड आपका स्टफिंग भी अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं अपने स्टफिंग को इजीली लॉक करने के लिए। अब पोनीटेल में हम थोड़ा सा बैक कोमिंग करेंगे ताकि हमें रूट से वॉल्यूम मिले, है ना। सेकंड पोनी में से करेंगे हम सेम चीज। चलिए, अब हम कर्ल्स के लिए टोंग मशीन लेते हैं और फिर हम कर्ल्स करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे कर्ल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे करूँगी शाइन स्प्रे। अब हम नीचे के हेयर्स को इस तरह से ज़ी-कॉम्ब की हेल्प से ओपन करते जाएंगे। जस्ट आपको स्मूथली ओपन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और इस तरह से टर्न देना है। चलिए, मैंने ऑल ओवर कर्ल्स को ज़ी-कॉम्ब की हेल्प से ओपन करके थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर दे दिया है।